इंशाल्लाह कुछ बनकर उनको दिखाना है कि ब्लाइंड किसी से कम नहीं है। बड़े होकर क्रिकेटर बनना है। मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ के डॉक्टर बनूँ। Aqil Sajjad, a visually impaired student from Islamabad, receives a PhD in physics from Harvard. Saima Salim becomes the first unsighted woman to join the Foreign Service after passing the highly competitive CSS exam. Gulzameen, a bright star from Malakan, is currently enrolled in the PhD program at Namal. Sana Iqbal becomes the first blind woman in KPK to be appointed as a social welfare officer. Blind since birth, Isa Khan mesmerizes thousands of people with his soulful voice on Swat FM. Unfortunately, no real statistics or registration systems for these people, in part due to the parents' reluctance to register such children. There are 11 schools for blind children in Khyber Pakhtunkhwa. All 11 of these schools are limited to elementary level schooling. यहाँ हमारे KPK में कोई भी स्कूल रेगुलर बच्चे के लिए रेगुलर स्कूल नहीं है, इन्हें पाँचवीं के बाद। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि फिर बच्चों को फिर या पिंडी लाहौर वगैरह भेज देते हैं। There is not a single Braille press in the entire province. In 1970, the government announced to set up a Braille press. 4 decades hence, we are still listening to the same announcements. बहुत बड़ा मसला ये है कि इनके पास यहाँ एक तो KPK में प्रेस नहीं है, इनके लिए किताबों की बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनको सामना करना पड़ रहा है। फिर हम इन बच्चों को क्या कहते हैं, सलामी पेश करेंगे कि इन 5 बच्चे 2 किताबों में पढ़ रहे हैं और उसके बाद ये लोग अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। बच्चे के पास किताब होगी तो वो पढ़ेगा। ब्रेल प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। The staff and teachers are trying their best to educate these children, but the task becomes more taxing in the absence of books or Braille reading material. On average, only 2 out of 6 students possess books. And these are the books that came from Lahore years and years ago. After years of usage, most of the Braille dots of these books have been worn off. Students have to take the Peshawar board exam but are compelled to study the books of the Lahore board. हम तो पंजाब और सिंध का सिलेबस पढ़ते हैं, तो वो भी हमें पंजाब में जो किताबें सिलेबस चेंज हो जाता है उससे 4 साल पीछे की किताबें दी जाती हैं। नॉर्मल बच्चे कुछ और पढ़ रहे होते हैं, हमारे स्पेशल बच्चे जो हैं वो कुछ और पढ़ रहे होते हैं। सिंध का कोर्स जो है ना हम इस्तेमाल करते आ रहे थे। जब वो ख़त्म हुआ तो बाद में जो है ना किताबें तो वही पुरानी किताबें इस्तेमाल करते थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ KPK में चूँकि प्रेस अपना है ही नहीं, वो किताबें जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, बाद में जो है हमने जो है ना कोशिश थोड़ी बहुत अपनी तरफ से की या PAB की तरफ से, तो कुछ किताबें जो है ना लाहौर प्रिंटिंग प्रेस से जो है ना हमें दस्तयाब हो गई। तो वो किताबें जो हैं वो मेरे ख़्याल में उनका भी कोई 10-12 साल हो गए जो हम उन किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। There is no formal institution for those who wish to continue their studies beyond primary level. There are no books.
or teachers or schools. Only the select few who are fortunate enough to travel to Lahore or Rawalpindi can continue studying. Unfortunately, in Pakistan, inclusive education for these children is next to impossible. जिन अदारों में हम बच्चियों को लेके जाते हैं तो वो दाखला सिरे से देने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये कोई ऐसा कानून बताएं कि जिसमें नबीना बच्ची भी नॉर्मल लोगों के साथ पढ़ सकती है। जब हम उन्हें ये बताते हैं कि आप ऐसा कानून बता दें कि नबीना नहीं पढ़ सकती तो इस पर वो मजबूर हो जाते हैं, लेकिन तरह तरह के वो बहाने करते हैं और बहुत मुश्किल से, पहले तो दाखला बहुत मुश्किल से मिलता है और अगर दाखला मिल भी जाए तो फिर वो टीचर्स का, स्टूडेंट्स का जो है इतना ताउन नहीं होता कि वो बच्चियाँ नॉर्मल लोगों के साथ मिलजुल के तालीम हासिल करें। Visually impaired girls suffer even more. Parents are generally not inclined to invest in the education of visually impaired children. In some cases, they are even leashed and restrained at home. Mostly these children are sent to madrasas to become hafiz, but even though religious education is essential, the state of modern schooling is devastating. ज़्यादातर तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से इस वजह से चले जाते हैं कि वो मदरसे में चले जाते हैं। हमारी कोशिश होती है बहरहाल उनको काउंसलिंग कर लेते हैं, बच्चे के भी साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, फिर भी मतलब है कि ये मसला भी हम फेस करते रहेंगे। सारे लोग यही कहते हैं आपने स्कूल में जाके क्या करने, जाओ मस्जिद में कहीं बैठ जाओ, तस्बीह लेके बस पढ़ो और ज़िक्र करो अल्लाह ताला की। ये अच्छी बात है, हम करते हैं ज़िक्र, ये नहीं कि हम ज़िक्र नहीं करते, हम ज़िक्र करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके साथ साथ हमें तालीम भी करनी चाहिए। आजकल के दौर में अगर कोई बंदा तालीम से महरूम रह जाए तो वो, मैं समझता हूँ वो बंदा है ही नहीं दुनिया में। जो बच्चे या बच्चियाँ जो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक उनकी रसाई नहीं होते तो वो ज़्यादातर यह है कि उसको मदारस में भेजते हैं वहाँ पे हिफ्ज़ के लिए, या उनको यह है कि फ़कीर बना देते हैं और वो बतौर भिखारी उसको यूज़ करते हैं, एज अ बेगर वो करते हैं। It is hard to find a volunteer writer for board exams. Even if they find one, the examination system makes it harder to accommodate them. राइटर तो मिलता तो है, लेकिन वो भी जो है ना बड़ी तकलीफ़ देह बात है, वो भी जो है ना बड़ी, उसमें भी बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। पहले जो है ना राइटर को ढूंढते हैं, राज़ी करते हैं, उसके बाद जो है जब हम ले जाते हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी लेवल हो उसमें जब हम ले जाते हैं तो वहाँ भी जो है ना बड़े मसाइल पैदा होते हैं। कभी कहता है कि ये प्राइवेट स्कूल से लिया, कभी सरकारी से ले लो, कभी जो है ना ये इस क्लास के बराबर नहीं है, वो बड़ी मसाइल वैसे बहुत ज़्यादा हैं। हर साल एग्ज़ाम से पहले मैं एजुकेशन क्विट करने की मेरे जहन में आती थी, बिकॉज वो परमिशन वाला जो एलिमेंट होता था एग्ज़ाम से बिल्कुल 1-2 दिन पहले आपको जिस किस्म का मेंटल टॉर्चर किया जाता था तो वो बहुत ही अनबेरेबल होता था। There is no formal training academy for special education teachers. Most teachers have religious education or informal degrees, and none of them are properly trained. School buildings in most cases are in shambles and pose a threat to life and security of students. Kids are taught weaving cane chairs in the name of vocational training. In some schools, there's a staff of 50 for only 30 students. Out of those 50, only 10 are teachers. The rest are the political appointments as cane workers. Cane work for the blind was introduced in the 70s. The world moved away decades ago, but the posts remained.
A few of these schools also have computer labs to boast of, but due to lack of instructors, space and internet, they are a mere waste of resource. There is still no Urdu reader software on computers and mobiles, making it hard for children to use technology if they do not understand English. अगर आप कंप्यूटर भी रखें, कंप्यूटर लैब भी बढ़ाओ, लेकिन कंप्यूटर टीचर ना हो तो कैसे सीखेंगे? But those who do learn computing and found proper schooling have done wonders. The lesson here is that when visually impaired children become financially independent, society accepts them and proper education is the only way to earn that living. अगर मैं एक जिस कम रिसोर्स पर्सन की बात करूं कि अगर उसके पास रिसोर्स नहीं है, कंप्यूटर का, ऑडियो बुक्स का नहीं है, उसके पास टेलीविज़न की रिसोर्स नहीं है या सोर्स नहीं है, तो वो अगर रूरल एरियाज़ में भी है तो वो रेडियो का बहुत ही अच्छा एक फ़ायदा ले सकता है, उसको यूज़ कर सकता है अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, अपब्रिंगिंग में, पर्सनल ग्रूमिंग में। रेडियो सुनता हूँ, मेरा रेडियो से बहुत शौक़ है। मैंने जो उर्दू सीखा हो तो मैंने रेडियो से सीखा है। ब्लाइंड लोगों के लिए रेडियो बहैसियत टीचर किरदार अदा कर रहा है। Thousands of visually impaired people yearn for this education but are forced to stay in the dark due to a serious lack of facilities. Each one of them could be a success story, could be a star, could have made the country proud. But unfortunately, not all of them are so fortunate. Some diamonds in the rough are forever bound to stay that way. There is a serious need to collect correct data of visually impaired people to plan long-term rehabilitation and welfare projects. Parents should be offered some incentive to educate their visually impaired children. Proper categorization of low vision or partially sighted and completely blind children should be done, and modern technology needs to be employed for their education. There should be more specialized institutions, at least one in each district. Buildings of visually impaired schools should be restored if needed and should be disability friendly and custom made for the students. Primary schools should be upgraded to high schools. Vocational training should be updated and political posts be eliminated. Braille press should be set up in KPK on emergency footing. Provision of Braille paper be ensured in schools for free. Braille books should be made available for each student. Special education teachers training program needs to be introduced. Audio recording of syllabus be arranged in KPK. Sports facilities in schools be provided and maintained. Radio and mobile technology may be used for educating visually impaired children. The government should take steps for making inclusive education possible. On college and university level, visually challenged students should be facilitated by the government as a priority area. Visually challenged students who pass matric should be awarded laptops and internet connections by the government. Computer labs, wherever available, should be made functional with instructors, electricity and internet. They must be preferred for jobs in specialized institutions. Plus, these institutions should be disability friendly. And above all, the government should take responsibility to ensure that whatever is announced is practically implemented. Through these measures, we can transform